Hello, dear learners. How are you all? I hope you all are fine and doing very well. Students, मैं हूँ आपकी कंप्यूटर टीचर and I'll be teaching you throughout this class. So please get ready for this amazing class. Please open chapter number 1. Okay, students. So the computer has become an integral component of our daily life. It is used in practically every industry, right? The word computer was initially used in 1613 to refer to a person who performed calculations or computations, and it was used in the sense until the turn of 20th century. Okay, then students, computers in earlier times, originally computations were done by humans. Okay, who were also known as computers. तो स्टूडेंट जो कंप्यूटेशंस होते थे वो कौन करता था? ह्यूमंस करते थे, जिनको कंप्यूटर्स ही कहा जाता था अर्लियर टाइम्स में. मोस्ट ऑफ द टाइम दीज ह्यूमन कंप्यूटर्स वर कैलकुलेटिंग मैथमेटिकल. ये जो ह्यूमन कंप्यूटर्स होते थे स्टूडेंट्स, क्या कैलकुलेट कर रहे होते थे? मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस. साइंटिस्ट लेटर डेवलप्ड अ वैरायटी ऑफ गैजेट्स टू रिप्लेस ह्यूमन कंप्यूटर्स फॉर कैलकुलेशंस. और लेटर ऑन साइंटिस्ट ने स्टूडेंट्स क्या किया कि वैरायटी ऑफ गैजेट्स लाके ह्यूमन कंप्यूटर्स को रिप्लेस किया. ओके, कैलकुलेशंस के लिए. Let us take a look at a few of such devices, students. So your first device is tally stick. So what is tally stick, students? So it was an ancient memory aid that was used to keep track of documents, numbers, quantities and even messages. तो students जो tally stick था ये हम रखते थे to keep track of documents का track रखते थे, ठीक है, numbers के लिए और quantities and even messages के लिए के ऊपर track रखने के लिए we use this tally stick. Okay students. Now, next we have students abacus. It was a mechanical instrument that allowed a person to execute mathematical calculations. और ये students एक क्या था? एक mechanical instrument था जो allow करता था person को ताकि वो execute कर सके mathematical calculations more quickly. And in 2400 BC, it was invented by Babylonia. It was invented in Babylonia. In the Far East, the abacus is still in use. अभी भी Far East में abacus use होता है. The abacus was initially used in China around 500 BC. So students, initially China used the abacus around 500 BC in the form we are acquainted with. Okay, basic arithmetic operations were performed on it. Okay, now students, next we have Napier's bones. In 1616 John Napier invented it. किसने invent किया था? John Napier ने किया था. It allowed the operator to multiply, divide, calculate square and cube roots by moving the rods around and inserting them into specifically constructed board. Students, तो क्या होता है कि 1616 में जॉन नेपियर डेवलप करते हैं नेपियर बोन्स को, और वो किस लिए यूज होता है? ऑपरेटर को. ऑपरेटर भी अलाउ द ऑपरेटर्स में हम अलाउ करते हैं ऑपरेटर को ताकि वो मल्टीप्लाई करे, डिवाइड करे, कैलकुलेट करे स्क्वायर एंड क्यूब रूट्स को, ठीक है, by moving the rods around and inserting them into specifically constructed boards. Okay students. Now next is students slide rule. It was invented by William Oughtred in 1622. ठीक है, ये किसने इन्वेंट किया था स्टूडेंट? स्लाइड रूल ये इन्वेंट किया था विलियम ऑट्रेड ने in 1622. It was based on Napier's theories regarding logarithms and it was mostly used for, क्यों यूज होता था स्टूडेंट्स ये स्लाइड रूल? For multiplication, division, roots, logarithms, trigonometry. Okay, and it was not normally used for addition or subtractions. Okay, so students, यहाँ पे info cell में हमारे पास एक information है जो क्या कह रही है? Slide rule was used by the NASA engineers for the Mercury, Gemini and Apollo programs to land men on the moon. So students, it was such important. Okay, it was so important that it was used by NASA engineers for the Mercury, Gemini and Apollo programs to land men on the moon. Okay students, next we have Pascaline. It was invented by Blaise Pascal in 1642. It could only do addition and subtraction. It was too expensive students, ये बहुत ही expensive था. This device used a series of tooth-head wheels. Okay students, so this is the picture of students Pascaline, right? This is the picture of Pascaline. And next we have students stepped reckoner. Step reckoner क्या है students? It was invented by Gottfried Wilhelm Leibniz in 1672. This machine could add, subtract, multiply and divide automatically. ये add भी कर सकती है, subtract भी, multiply और divide भी कर सकती है automatically. It expanded on Pascal's ideas and did multiplication by repeated addition and shifting. Okay. Now next we have students is Jacquard loom. So Jacquard loom ये कुछ इस तरह दिखता है students. So Jacquard loom was a mechanical loom invented by Joseph Marie Jacquard in 1804. It was an automatic loom controlled by punch cards. Okay. इसके बाद आता है students
अरिथमोमीटर। अरिथमोमीटर क्यों यूज होता है? इन 18 देखिए स्टूडेंट्स, अरिथमोमीटर कुछ इस तरह दिखता है। एंड इन 1820 थॉमस डी कॉल्डमन इन्वेंटेड अ मैकेनिकल कैलकुलेटर एंड इट वाज द फर्स्ट कैलकुलेटिंग मशीन दैट was both reliable and functional as well as financially successful. This machine was capable of performing four fundamental mathematical functions and it was the first calculating machine that was mass produced. Students, ये पहली ऐसी calculating machine थी जो mass produced हुई थी, यानी कि बहुत ही भारी मात्रा में से इसका प्रोडक्शन हुआ था. Okay students, and it was developed by Thomas D. Colmer in 1820. Okay students, and next we have is analytical engine. Analytical engine students कुछ इस तरह दिखता है. Analytical engine was the machine proposed by Charles Babbage in 1833. तो students, Charles Babbage, जिनको फादर ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है, उन्होंने डेवलप किया था एनालिटिकल इंजन 1833 में. दैट इज कंसिडर्ड टू बी द कॉन्सेप्ट फॉर द फर्स्ट जनरल मैकेनिकल कंप्यूटर. सो स्टूडेंट्स, दिस वाज द फर्स्ट जनरल मैकेनिकल कंप्यूटर invented proposed by Charles Babbage in 1833. Okay, next we have students Schutzian calculation engine. It was invented by Per George Schwartz in 1843 and it was based on Charles Babbage's reference engine. Okay, and it was the first printing machine. Students, this was the first printing machine. Okay, next we have students is tabulating machine. It was invented by Herman Hollerith in 1890. It was used to assist in summarizing information and accounting. और ये क्यों यूज होती है? इंफॉर्मेशन को समराइज करने के लिए और अकाउंटिंग करने के लिए. दिस डिवाइस कुड ऑटोमेटिकली रीड इंफॉर्मेशन विच हैड बीन पंच्ड ऑन द कार्ड. ठीक है, और ये जो स्टूडेंट्स डिवाइस जो हुआ था, ये ऑटोमेटिकली रीड होता है, इंफॉर्मेशन को रीड करता है विच हैड बीन पंच्ड ऑन द कार्ड. ओके, and in later years Hollerith's machine became very useful for a wide variety of statistical applications. In February 1924 Hollerith's कंपनी चेंज इट्स नेम टू इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स और IBM. ओके, और इस कंपनी ने स्टूडेंट्स अपना नेम चेंज कर लिया था 1924 में, फरवरी 1924 में. किस नाम से? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स, दैट मींस IBM. फिर आता है स्टूडेंट्स हार्वर्ड मार्क 1. इट वाज नोन एज द IBM ऑटोमेटिक सीक्वेंस कंट्रोल्ड कैलकुलेटर. इट वाज IBM's ऑटोमेटिक सीक्वेंस कंट्रोल्ड कैलकुलेटर. इट वाज इन्वेंटेड बाय हॉवर्ड H. in 1944 and it was the first electromechanical computer. Okay students, next we have is Z1. So Z1, it was the first programmable computer. It was created by Konrad Zuse of Germany 1936 to 1938. ठीक है, तो ये किसने क्रिएट किया था स्टूडेंट्स? कॉनरेड जूस ने, जो कि जर्मनी के थे. कब किया था? फ्रॉम 1936 टू 1938. टू प्रोग्राम Z1 required that the user inserts punch tape into a punch tape reader and all in output was also generated through punch tape. Okay, next we have students is Atanasoft Berry computer. So Atanasoft Berry computer, that means ABC. It was first electronic digital computing device. ये पहला electronic digital computing device है. It was invented by Professor John Atanasoft and graduate students Clifford Berry. Okay, at the Iowa State University between 1937 and 1942. फिर आता है स्टूडेंट्स ENIAC computer. ENIAC. Okay, so this is a picture of ENIAC. That means it stands for Electronic Numeral Integrator and Computer. किस लिए stand करता है स्टूडेंट्स ये? Electronic Numerical Integrator and Computer. It was the first electronic general purpose computer completed in 1946. ये पहला ऐसा general computer था, general purpose computer student, जो complete कब हुआ था? 1946 में. And it was developed by John Presper Eschert and John Moseley. Okay students. फिर आता है स्टूडेंट्स यूनिवैक. यूनिवैक मीन्स यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर. वाज फर्स्ट कमर्शियल कंप्यूटर which can handle both alphabetical and numerical data. It was designed by John Presper Eschert and John Moseley. Okay, तो स्टूडेंट्स ये भी है यूनिवैक, जिसका फुल फॉर्म है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर. ये पहला कमर्शियल कंप्यूटर था जो दोनों ही, यानी कि अल्फाबेटिकल और न्यूमेरिकल डेटा दोनों ही हैंडल कर सकता था. ओके, एंड स्टूडेंट्स देन वी हैव एडवैक. एडवैक स्टैंड्स फॉर स्टूडेंट्स इलेक्ट्रॉनिक discrete variable automatic computer. It was the first stored program computer designed by John Moseley and John Presper Eschert. Okay, तो एक पहला ऐसा प्रोग्राम था जो first stored program computer designed by John Moseley and John Presper Eschert. It had a memory to hold both a stored program as well as a data. और इसके पास मेमोरी थी दोनों ही चीजें होल्ड करने की, तो वो stored प्रोग्राम भी स्टोर कर सकता था स्टूडेंट्स as well as data. Okay, next we have students the first portable computer, that was Osborne 1. First portable computer was Osborne 1 was first portable computer. It was released in 1981 by the Osborne Computer Corporation. Okay students, this was the first portable computer. Okay,
Now students, let's read about the generations of computer. Nowadays computers are being used in different places, right? The volume of work, feature, functionality etc varies from place to place. So it was required to develop different types of computer. इसीलिए जरूरत पड़ी कि हम different types of computer को लेकर आए, क्योंकि volume of work and features it varies from place to place. Okay, generations refer to the time period when a computer is being developed. Generation refer करता है students एक time period जब computer develop हुआ था. After each and every generation, the technology of computer advanced significantly to fulfill human needs. Okay, हर एक जनरेशन के बाद स्टूडेंट जो कंप्यूटर की जो टेक्नोलॉजी है वो एडवांस होती रही. क्यों होती रही? ताकि वो ह्यूमन की नीड्स को फुलफिल कर पाए. ठीक है, सो लेट अस लुक एट डिस्टिंक्ट जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर्स. सो स्टूडेंट्स यहाँ पढ़ने वाले हम डिस्टिंक्ट जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर्स. तो स्टूडेंट्स फर्स्ट जो आता है वो फर्स्ट जनरेशन है 1940 टू 1956 के बीच होता है स्टूडेंट्स फर्स्ट जनरेशन. ठीक है, और यहाँ पर हम स्टूडेंट्स हार्डवेयर कंपोनेंट क्या यूज करते थे कंप्यूटर्स में? वैक्यूम ट्यूब्स यूज करते थे. और ये रही स्टूडेंट्स पिक्चर, दिस इज अ पिक्चर ऑफ वैक्यूम ट्यूब्स. और इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या थी स्टूडेंट्स? दैट वी यूज मशीन लैंग्वेज इन दिस कंप्यूटर, राइट? वैक्यूम ट्यूब्स यूज करते थे. साथ ही इसके कैरेक्टरिस्टिक्स में आता है कि हम मशीन लैंग्वेज यूज करते थे. इसका जो साइज था वो बहुत ही ज्यादा बड़ा था. इट हैज ह्यूज साइज, हाईली एक्सपेंसिव था स्टूडेंट्स ये कंप्यूटर जो फर्स्ट जनरेशन में आया था. एंड हाई कंजप्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यहाँ पर होता था हाई कंजप्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. सो स्टूडेंट्स मशीन लैंग्वेज, huge size, highly expensive, high consumption of electricity are the characteristics of the first generation computers which were developed in 1940 to 1956. Okay, what are the examples of first generation computer students? So ENIAC, UNIVAC, EDVAC, EDSAC and Mark 1 are the examples of first generation computers. Now come to the second generation computer students. So second generation was a period between 1956 to 1963. Okay, so here instead of vacuum tubes, the technology got advanced and we started using transistors and magnetic tapes. हम क्या यूज करने लग गए थे? ट्रांजिस्टर्स और मैग्नेटिक टेप्स यूज करने लगे थे स्टूडेंट्स. और ट्रांजिस्टर्स कुछ ऐसा दिखता है पिक्चर में. ओके, सो स्टूडेंट्स व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेकंड जनरेशन कंप्यूटर्स? तो स्टूडेंट्स ये था बैच प्रोसेसिंग, मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पर आ गया था. ओके, ये एक्सपेंसिव भी था. एंड यहाँ पर हम फॉर्ट्रैन एंड कोबोल करके we use the Fortran and COBOL language we use here. Okay, so students, what are the example of second generation computers? So here are the examples: IBM 700, CDC 1604, Atlas, NCR 304 series and Honeywell 400 are the examples of second generation computers. उसके बाद आता है स्टूडेंट्स थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स 1964 टू 1971, जहां पर स्टूडेंट्स हम ट्रांजिस्टर्स और मैग्नेटिक टेप्स की जगह इंटीग्रेटेड सर्किट्स यूज करने लग गए हैं. एंड what are the characteristics of third generation computer students? So remote processing, time sharing, multi programming operating system, faster, compact and cheaper. Okay, so students यहाँ पर हम रिमोट प्रोसेसिंग करते हैं, टाइम शेयरिंग होता है, मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है ये, जो फास्टर है, कॉम्पैक्ट है और चीपर है. पहले जितने कंप्यूटर्स थे वो क्या थे? एक्सपेंसिव थे, बट दिस कंप्यूटर इज चीपर. जहां पर स्टूडेंट्स पास्कल, PLI, बेसिक, एल्गोल 68 लैंग्वेजेस यूज करते हैं हम कंप्यूटर में. ठीक है, एंड व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ द थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स? IBM 360, 370, PDP 8N, CDC 1600, ICL 1900, UNIVAC AC 9000. Okay, now students come to the fourth generation computers which were from 1972 to present. Okay, so VLSI microprocessor circuits students यहाँ पर हम use करते हैं VLSI microprocessor circuits. तो students time sharing, real time networks, distributed, GUI OS. तो students यहाँ पर क्या हो रहा है कि हम टाइम शेयरिंग कर पा रहे हैं, रियल टाइम नेटवर्क्स यूज कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड GUI OS आ चुका है, यानी कि यहाँ पे ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम आ गया है जो कि फास्टर है, कॉम्पैक्ट है, अफोर्डेबल है. और लैंग्वेजेस स्टूडेंट्स यहाँ पर हम क्या यूज कर रहे हैं? C, C++, D बेस्ड, राइट? एंड व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर स्टूडेंट्स? सो दैट आर DEC Star, DEC 10, Star 1000, Apple II, VEX 900, IBM PC 1981 and Apple Mac 1984. Okay, now students, in fifth generation computer present and beyond, we are using ULSI and microprocessor circuits in our computer system. Okay, and what are the
characteristics of fifth generation computer, students, that here we often see the parallel processing and artificial intelligence technology in fifth generation computer. And what are the languages we are using, students? C, C++, Java and Net. And what are the examples of the fifth generation computer, students? IBM, Pentium and Param. Okay, IBM, Pentium and Param. So students, now come to the infosol, which consists of actual information that a jiffy is an actual measurement of time. Okay, a jiffy is an actual measurement of time referring to the length of one cycle of computer's system clock, about 10 milliseconds. Okay, तो students, एक टाइम जो लेंथ ऑफ वन साइकिल ऑफ कंप्यूटर सिस्टम की जो क्लॉक है वो क्या है, लेंथ उसकी 10 मिलीसेकेंड्स है, और एक्चुअल जो मेजरमेंट ऑफ टाइम हम बोलते हैं 10 मिलीसेकेंड्स का, वो हम जिफी कहते हैं उसे. ठीक है स्टूडेंट्स. नाउ here computers are classified, students. So computer is broadly classified by the speed and computing power. Okay, so computers are classified into personal computer, students, workstation, mini computer, mainframe computers, supercomputers. Okay students, let's learn about them one by one. So computer is broadly classified by their speed and computing power. First is, students, personal computer. A PC can be defined as a small, relatively inexpensive computer designed for an individual user. तो students, ये जो PC है ये define किया गया है कैसे कि ये small computer है, relatively inexpensive है, okay, and it was designed for an individual user. Okay, PCs are based on microprocessor technology, and they are based on the microprocessor technology that enables manufacturers to put an entire CPU on one chip. एक entire CPU जो प्रोसेस करता है इनपुट और आउटपुट को, वो उन्होंने एक ही चिप पर रख दिया है, जो कि उसे हम क्या कहते हैं, माइक्रो प्रोसेसर कहते हैं इन personal computers. Okay students, businesses use personal computers for word processing, accounting, desktop publishing and running spreadsheet and database management applications. Okay students, तो अब यहाँ पढ़ते हैं हमारा सेकेंड कंप्यूटर, जो कि है वर्क स्टेशन. वर्क स्टेशन इज अ कंप्यूटर यूज फॉर इंजीनियरिंग एप्लीकेशन. स्टूडेंट्स, जो वर्क स्टेशन है ये कंप्यूटर में यूज होता है फॉर इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस. फॉर एग्जांपल CAD, CAM. Okay, so desktop publishing, software development and other such type of application that require a moderate amount of computing power and relatively high quality graphics capabilities. Okay students, अब पढ़ते हैं students mini computer के बारे में. A mini computer is a small and general purpose computer. It is more expensive than a microcomputer. It has more storage capacity and speed. It is designed to simultaneously handle the needs of multiple users. Okay, now we have students mainframe computers. The mainframe is a very large in size and is an expensive computer capable of supporting hundreds and even thousands of users simultaneously. Mainframe executes many programs currently and supports much simultaneous execution of programs. Okay students, and next type of computer we have, students, is supercomputers. Are one of the fastest computer currently available. Supercomputers are very expensive and are employed for specialized applications that require an immense number of mathematical calculations, number crunching. For example, students, for weather forecasting, scientific simulations and animated graphics, fluid dynamic calculations, nuclear energy research, electronic design, analysis of geological data. For example, in petrochemical prospecting, we use supercomputers. Okay students, now let's learn about some latest technological advancements. So wearable technologies, from wrenches, from watches to rings, we are in the midst of an electronic wearable revolution, right? So wearable gadgets are the latest buzz word in the field of technology, students. So most of the wearable gadgets available nowadays are wrist worn. Okay, जितने भी students, जितने भी wearable gadgets होते हैं वो अभी wrist worn available हैं, यानी कि उनको हम wrist पर पहन सकते हैं. But there are others that can be hung around the neck. कुछ ऐसे digital wearable technology students हैं जो कि हम अपनी neck के around भी पहन सकते हैं और can be worn as a piece of jewelry. As a piece of jewelry भी हम उन्हें पहन सकते हैं. Following are some of the most popular gadgets in this category. So students, first आता है fitness trackers. Fitness trackers are the wristbands or the watches that keep a count of number of steps we take each day. जितने भी number of steps आप हर एक दिन लेते हो तो वो count कौन करता है? Fitness trackers count कर सकता है. And the calories we burn, जितनी भी calories आप burn करते हो एक दिन में वो count करेगा fitness trackers. Some may also monitor physical activity and vital signs followed with parameters such as pulse rate and heart rate. Example, Fitbit. Okay,
फिर आता है स्टूडेंट स्मार्ट वॉचेस. अ स्मार्ट वॉच इज अ वेरिएबल कंप्यूटिंग डिवाइस दैट क्लोजली रिजेंबल्स अ रिस्ट watch or other time keeping device. Okay, smart watches can be connected with smartphones and keep us updated with notification and messages. जो smart watches है students, ये हमें update करती रहती है notification और messages से. We can make calls, send message, read news and listen to music using a smart watch. हम कब किसी को भी फोन मिला सकते हैं, मैसेज भेज सकते हैं, न्यूज रीड कर सकते हैं, म्यूजिक सुन सकते हैं स्मार्ट वॉच के थ्रू. They may also include functions of fitness trackers, example Apple Watch. Okay students, now we have artificial intelligence and machine learning, AI and ML. So students, a lot of developments are happening which has led to the development of improved technology using chatbots, voice based assistants जैसे कि Siri, Alexa, etc. and robots. AI driven platforms have been bound to automate their business and develop a breakneck speed. Okay students, so here we in this chapter we have learned the birth of computer, to our birth of computer and generations of computer, types of computer, and what are the gadgets today we are using as a wearable technology, right students? So these are the things we studied in this chapter. I hope you understood this chapter. I hope you understood this chapter very well students. Let us read about some reboots point of this chapter. So the word computer was originally used in 1613. The abacus was initially used in China around 500 BC in the form of we are acquainted with. Slide rule was based on Napier's theories regarding logarithms. The Jacquard loom was an automatic loom controlled by punched cards. Okay. Schutzian calculation engine was based on Charles Babbage's reference engine. Generations ago to the time period when a computer is being developed, AI-driven platforms have been bound to automate their business and develop at breakneck speed. Okay students, so these are the reboots points from this chapter. I hope students आपको ये chapter समझ आया होगा. तो हम मिलते हैं students अगले chapter में अगली वीडियो के साथ. तब तक students please keep revising, keep learning. Okay students, thank you, all the best.